as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity
making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers
to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. India
has the potential to emerge as a global hub for high-quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design, as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years,
RITES have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated RITES. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector
and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Viksit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements, and propose
measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet
there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated
Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage.
Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers,
connectivity, and program pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt-to-GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt-to-GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt-to-GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honourable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024,
I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both
There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process
without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%.
I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set-off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set-off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India.
biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer
an arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026.
प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। As we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience. तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है। और आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार जो है ये बजट पेश किया है। इस बजट पर करोड़ों लोगों की नजर थी और अब जब निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है तो हम आपको बता देते हैं कि इस बजट में लोगों के लिए क्या कुछ खास है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया गया है। इसमें कई अहम जो बातें हैं वो इस बजट से निकल करके सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट जो है वो 9वीं बार पेश किया है, जिसमें आपको बता दें कि देश में 3 और नए एम्स खोलने का फैसला लिया गया है। 15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक कम फीस के साथ ITR दाखिल होगा। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन होगी। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्थायी समिति बनाएंगे। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट से कई अहम बातें जो है वो निकल करके सामने आई है। निर्मला सीतारमण के द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है उसमें
हर जिले में बनाए जाएंगे एक गर्ल्स हॉस्टल। जी हां, ये बड़ा फैसला लिया गया है गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के, जहां हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च की पहल होगी। वहीं एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। ये बातें जो है वो निर्मला सीतारमण ने कही है। आपको बता दें कि गरीबों पर हमारी सरकार का फोकस है, ये निर्मला सीतारमण ने कहा है। इस बजट पर गरीबों को भी फोकस किया गया है। आपको ये भी बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट पेश करने के दौरान कहा है कि अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव है। वहीं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्लान भी है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का भी प्लान है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना भी शुरू की जाएगी। बायो फार्मा सेक्टर को बढ़ाने के लिए 40,000 पशुधन के आधुनिकीकरण पर जोर जो है वो दिया जाएगा। जीएसटी का सरलीकरण भी हुआ है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने ये जो बजट पेश किया है उसमें कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने की जो तैयारी है वो चल रही है। पूरी तरह से इसे मजबूत किया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी स्थिरता आई है। तो अर्थव्यवस्था को लेकर के ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थायी आई है। हम जल्द ही विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। जी हाँ, तो ये बातें जो है निकल करके सामने आई है केंद्रीय बजट से, जिसे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। उन्होंने कहा है देश दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट पेश के दौरान कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है। हम जल्द ही विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। देश दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। गरीबों पर हमारी सरकार का फोकस है। रोजगार सृजन में सरकार ने बेहतर सुधार किए हैं। SC/ST वर्ग को सरकार से फायदा हुआ है। AI को लेकर भी सीतारमण ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, बताया है कि AI हमें अच्छी तरह आगे लेकर जाएगा। GST का भी सरलीकरण हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। 2026-27 बजट है और इस बजट पर करोड़ों लोगों की नजर जो है वो टिकी हुई थी। लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। बजट से कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। इसमें 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन जो है वो भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज स्थायी समिति भी जो है वो बनाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ITR को लेकर भी खबर सामने आई है कि 31 मार्च तक कम फीस के साथ ITR दाखिल होगा। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की जो डेडलाइन है वो होगी। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हम आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इंपोर्ट पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है इनकम टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनकम टैक्स को लेकर लगातार कई लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है। लोग काफी समय से इंतजार करते हैं कि जब उनका बजट पेश होगा तो उनकी नजर जो है वो इनकम टैक्स स्लैब पर होगी, लेकिन इस इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीतारमण ने कहा है कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नारियल उत्पादन को लेकर भी बड़ी बात निर्मला सीतारमण ने कही है। इस बजट पेश के दौरान उन्होंने कहा है नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन है। तो आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबर है वो हम आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। और इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़ रहे हैं। निर्भय,
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स को लेकर लोगों की लगातार नजरें बनी हुई थी। देखिए, जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, आम लोगों की जो होती है सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर होती है तो वो होती है टैक्स स्लैब में कि क्या कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इस बजट को एक नया नाम दिया, रिफॉर्म एक्सप्रेस की बातें कह रही है, उस तरीके से सरकार ने बखूबी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करके नए रिफॉर्म, नए मुद्दों पर चर्चा किया गया इस बजट में। वैसे तो वित्त मंत्री ने आज जो बातें कही, इसमें इस बजट में कुछ खास ऐसा अगर लोग कहेंगे तो उस तरीके से बातें नहीं दिखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये रही कि टैक्स स्लैब, लोगों को ये उम्मीदें थी कि लगभग अगर टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हो फिर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो जिसको हम कहते हैं जो 75,000 था वो अस्थायी 75,000 ही है। यानी कि अब भी लोगों को 12,75,000 रुपए पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे थे नहीं तो कम से कम सरकार 25,000 रुपए की और छूट दे सकती है और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करके लगभग 13 लाख रुपए सालाना हो सकता है। लेकिन सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया, तो साफ है कि सरकार ने इस बार लोगों को लोक लुभावने वादे नहीं किए हैं। अगर आप पूरे बजट के तौर पर देखेंगे तो बजट में सबसे बड़ी जो बातें रही, हमने उसमें देखा कि सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा जोर दिया है कि पर्यटन आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था की है और पर्यटन को मजबूती से एक शक्ति प्रदान करना कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला होगा इस बार का बजट। इसके अलावा आप देखेंगे तो महिलाओं को सरकार ने सशक्त करने की बातें कही हैं, दिव्यांगों को सशक्त करने की बातें कही हैं, किसानों के आप जब सुन रही थी बजट में, जब निर्मला सीतारमण जब वो भाषण दे रही थी बजट भाषण, इस दौरान उन्होंने कई बार किसानों की आय को बढ़ाने की बात कही है। हमेशा मोदी सरकार ये जरूर कहते आई है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, तो इस बार किसानों की आय को बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिव्यांगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी और मजबूती प्रदान करने की बात कही है। इस तरीके की तमाम ऐसी बातें जो रही हैं वो हमने देखा, उसमें बखूबी उन्होंने जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जी निर्भय तो हमारे साथ निर्भय जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि आगे भी हम उनसे बातचीत करेंगे, तो ये बड़ी खबर जो है वो हम सीधे आपको दे रहे हैं केंद्रीय बजट को लेकर। निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया है, इस पर विशेष जानकारी जो है वो हम निर्भय किशोर से लेंगे। निर्भय ये बताइए कि निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हम गरीबों पर फोकस कर रहे हैं, कितना ये फोकस दिखा है गरीबों पर? देखिए, बिल्कुल निर्मला सीतारमण ने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि जो गरीबी रेखा से जो लोग थे उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार सरकार गरीबों के लिए तो कर रही है। हालांकि स्थिति जो भी रहे हो, चाहे रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, एमएसएमई को बढ़ावा देना, इसके अलावा आप देखिएगा आज जिसकी हम बात कर रहे हैं मनरेगा जो था एक बहुत बड़ी केंद्र सरकार की योजनाएं थी। हालांकि अब उसमें बड़ी परिवर्तन की जो तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं। आगे क्या होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल मनरेगा ने बहुत कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त जरूर किया है और रोजगार गारंटी की उसमें बड़ी योजना थी। तो गरीबों को लेकर के सरकार अब ये दावे कर रही है। आप इसके साथ साथ देखिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार जोर दे रही है। अब सरकार ने जिस अनुसार ये कहा है कि बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन ग्राउंड स्तर पर भी देखिए तो दिखती जरूर है। हालांकि सरकार को लेकर के अगर सरकार जो भी दावे कर रही है तो विपक्ष इसे मानने को तो तैयार नहीं ही होगा, लेकिन सरकार का ये दावा है कि बीते एक दशक में बहुत परिवर्तन हुआ है और लगभग करोड़ों लोग जो है ऐसे जो गरीबी से मुक्त हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें दावे करी। इसके अलावा देखिए आगे अगर बात की जाए तो इस बजट में जो सरकार ने इस बार दावे किए हैं, जो निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, उसमें कुछ सेक्टरों की हमने जिक्र किया। इसमें देखिए एक सबसे बड़ी बात है, किसानों को लेकर के सरकार ने इस बार बहुत ध्यान दिया है। पशुधन की हम बात करते हैं, जो कि पशु होते हैं, चाहे पशुधन में आप देख लीजिए गौ पालन की बात की जाए, डेयरी की बात सरकार ने की है, गौ पालन की बात की जाए, भैंस पालन की बात की जाए, इसके अलावा और भी कई सेक्टर में तेजी से लोग बढ़ते जा रहे हैं इसमें पशुधन के मामले में। तो फार्मिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए आप देखिएगा तो सरकार कई ऐसी योजनाओं का जिक्र कर रही है। सरकार ने ये कहा है कि पशुधन को आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो इसके लिए सरकार चाहे मछली पालन, चाहे डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ऐसी योजनाओं पर काम करने की बातें कह रही है।
इसके अलावा देखिए ग्रामीण स्तर में अगर हम बात कर रहे हैं तो गरीबी को उबारने का भी एक आगे का जो बजट है, इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी दिखी हैं। लखपति दीदियों के लिए जो बातें अब तक आपने सुना होगा, लेकिन अब क्रेडिट ग्रामीण स्कीम की शुरुआत की जाएगी। क्रेडिट लिंक यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रिटेल आउटलेट की बातें कही गई है कि इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार अब इस पर पूरी तरीके से जोर देगी। अब देखिए किसान, इसके अलावा महिलाओं और दिव्यांगों की बात सरकार करिए कि दिव्यांगों के लिए समूह ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग कैसे आगे बढ़ सके, उनके लिए आउटलेट जैसे कई सुविधाएं ऐसी होंगी। सरकार रोजगार को मजबूत करने के लिए उनके लिए भी काम करेंगी। इसके अलावा किसानों के लिए तो हम बात ही करें, भारत में विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अखरोट, बादाम, नारियल, काजू पैदावार जैसे जो उत्पाद हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार बखूबी काम करेगी। काजू, कोको जैसे जो उत्पाद हैं, इसको सरकार बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। तो बिल्कुल आज के इस बजट में बहुत ऐसी तस्वीरें दिखी हैं जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारे तो कर रही है। हालांकि वक्त बताएगा कि क्या कुछ तस्वीरें किस तरीके की उभर करके सामने आती है। प्रीति जी, निर्भय कहा यह भी जा रहा है, जो निर्मला सीतारमण ने बताया है वो हम आपको बता रहे हैं कि राजकोषीय घाटे में भी कमी आई है, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि 26-27 में जो राजकोषीय घाटा है वो 4.3% रहने का अनुमान है। क्या लगता है इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सरकार ये दावे कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके कुछ बड़े प्लान होंगे, कुछ बड़ी तस्वीरें उभर करके सामने आई है। और दूसरी तरफ अगर लोगों की आय के स्रोत बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार की भी अपने जो राजकीय कोषीय घाटे होंगे वो कम किए जाएंगे। पिछले बार आपने देखा था कि 4.5% जो है वो राजकोषीय घाटा था, लेकिन इस बार सरकार का लक्ष्य है कि इसमें 0.2% कम किया जा सके। और इस कम करने को लेकर के सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे काम कर रही है। कहा अब राजकोषीय घाटा 4.3, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इस बार वित्त मंत्री ने कहा है कि 4.3% राजकोषीय घाटा को वो कम करेंगे। राज्यों को इस बार जो पैसे जो दिए जाते हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा कि 1.4 लाख करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार राज्यों को देंगी। तो राज्य बढ़ेंगे, इसके अलावा लोगों की आय के स्रोत बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार एक बड़े प्लान, और जिस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात की है, हालांकि विपक्ष तो इसको बजट से पहले ही बहुत ऐसी बातें कहता जरूर दिखा है, लेकिन अब ये रिफॉर्म एक्सप्रेस जब चल पड़ी है केंद्र सरकार की, तो ये कितना कुछ परिवर्तन करती है, कितना कुछ बदलाव करती है, ये देखना होगा। लेकिन पूर्ण रूप से सरकार ने इस बार के बजट में कुछ लोक लुभावनी तस्वीरें तो नहीं दिखाई हैं। शायद लगता है कि तत्काल प्रभाव से जमीनी स्तर पर ऐसे कोई विकास नहीं दिख रहे हो, चाहे नहीं ऐसी कोई तस्वीरें बदलती हुई नहीं दिख रही हो। लेकिन ये जरूर है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता ये देश आगे आने वाले दिनों में इस तरीके से अगर सरकार ने जो इस बार का बजट पेश किया है उसमें बहुत कुछ दिखेंगी। रोजगार सृजन की बात हम कर रहे हैं तो सरकार ये कह रही है कि रोजगार देने के लिए तो नहीं, लेकिन रोजगार को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए नौकरी की बातें नहीं की। लोग काफी स्तर पर देखते हैं कि सरकार नौकरी लेकर के आएगी, लेकिन नौकरी के साथ साथ लोग इस बार सरकार जो है इस बार उद्यमियों पर एमएसएमई को मजबूत करने के लिए, प्रशिक्षण प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसी योजनाओं पर काम करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने, सरकार ने एक चीज ये कहा होगा, आपने सुना होगा कि कई ऐसे पर्यटक स्थल जो होंगे, जैसे 20 बड़े पर्यटन स्थलों पर गाइड प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। ये गाइड प्रोजेक्ट की शुरुआत एक रोजगार की तरफ, एक नौकरी की तरफ इशारे करती है। पूर्वोत्तर राज्यों के 5 पर्यटक स्थल का विकास होगा। 3 पूर्वोत्तर राज्यों में 400 ई बसों की शुरुआत होगी। तो देखिए ये सारी जो व्यवस्थाएं जैसे जैसे जब सुदृढ़ होंगी, जब जमीनी स्तर पर उतरने लगेगा, तो कहीं ना कहीं नौकरी रोजगार की तरफ एक बढ़ता हुआ देश ये दिखेगा। और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो देश जरूर मजबूत होगा। जी बिल्कुल निर्भय। और शिक्षा को लेकर भी इस बजट में छात्रों को लेकर के बड़ी बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि विदेश में अब पढ़ाई करना जो है वो सस्ता हो गया है। इसके अलावा कैंसर और शुगर मरीजों के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दवाइयां हैं जिन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे कम किया गया है। प्रीति ये बिल्कुल सही है कि सरकार ने ये कहा है कि लगभग 17 प्रकार की कैंसर की ऐसी दवाइयां होंगी जिसको बड़ी राहत और लोगों को सस्ते, जो भी मरीज होंगे उनको सस्ती कीमत पर उपलब्ध होगी। दूसरी तरफ आपने कहा कि विदेशों को लेकर के, तो विदेशों में एक मेडिकल इलाज जो होते हैं वो और पढ़ाई की व्यवस्था होंगी जो सस्ती हो जाएंगी। सरकार ने इसको लेकर के कहा है कि टीसीएस में कमी की जाएगी। जो टीसीएस होता है यानी कि विदेशों में जो आप खर्च करते हैं उस पर जो लगने वाले चार्ज होते हैं, जो सरकार जो ब्याज लेती है, उस पर सरकार ने इस बार बड़ी कटौती की है। और
पहले ये 5% लगता था टीसीएस, लेकिन अब इसे 2% कर दिया है सरकार ने। इससे तय है कि आप विदेशों में जो भी पैसे खर्च कर रहे होंगे उस पर सरकार अब मात्र आपसे 2% की ब्याज दर चार्ज करेंगी। पहले ये 5% लगता, तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो मेडिकल और पढ़ाई, विदेशों में पढ़ाई जो है उसको सस्ता करने की बात कर रही है, ताकि उच्च शिक्षा को और बढ़ावा मिल सके, और ये देश की एक तस्वीरें बदलने वाली फैसले होंगे। दूसरी तरफ आपने कहा कि कैंसर की जो दवाइयां होंगी, तो बिल्कुल कैंसर के 17 दवाइयों को लेकर के सरकार ने कहा है कि वो उसके चार्ज कम होंगे, कस्टम ड्यूटी घटाई जाएंगी, कई ऐसी चीजों पर तो थोड़ी बहुत राहत आम लोगों को इस तौर पर भी मिल सकता है। तो ये एक बड़े फैसले के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो देखिए कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कस्टम ड्यूटी को तो ऐसे लेकर के, चाहे जीएसटी को लेकर के सरकार ने कहा, मैंने सीधे तौर पर कहा कि आसान भाषा में अगर समझे तो लोगों को तत्काल प्रभाव से राहत नहीं दिख रही है प्रीति, लेकिन इसका दूरदृष्टिगामी जब परिणाम होंगे तो वो लोगों को बड़ी राहत के तौर पर इशारे कर रही है। और ये लोक लुभावने बजट तो नहीं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ ये बजट दिखाई दे रहा है। जी निर्भय, क्या जो तमाम विपक्षी नेता हैं उनके तरफ से कोई बयान आया है क्या? क्योंकि लगातार जब भी बजट पेश होता है विपक्ष का कहना होता है कि ये सिर्फ 1 साल का बजट, 2 साल का बजट नहीं है, बल्कि सरकार जो है आने वाले 10 साल या 15 सालों का बजट जो है वो पेश कर रही है। लोक लुभावन जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं। तो इस बजट में क्या लगता है कि इस बजट से जो विपक्ष है वो संतुष्ट है? देखिए, विपक्ष तो अब बजट अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, तो अब विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी सदन में। सदन से निकलेंगे जब विपक्षी नेता, तो वो अपने बयान भाषण देंगे। स्थानीय तौर पर जो नेता है वो अपना बयान भाषण देंगे। लेकिन बजट शुरुआत से पहले हमने सुना था प्रियंका गांधी जब वो सदन में जा रही थी, इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई उम्मीदें नहीं दिख रही है और ऐसी कोई तस्वीरें बनती हुई भी नहीं दिख रही है। अगर सरकार डिडक्शन कम करती है तो भी इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि देश में विकास की तस्वीरें दिख नहीं रही है। तो प्रियंका गांधी ने जरूर केंद्र सरकार पर निशाने साधे हैं। प्रियंका गांधी ने जरूर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। इसके अलावा हमने यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उनको हमने सुना, वो कहते हैं कि अब तक सरकार ने जो वादे किए थे क्या उसकी तस्वीरें बदल पाई है? अब तक सरकार ने जो दावे किए थे, जो योजनाओं की घोषणा की गई थी, क्या सरकार उसमें कुछ परिवर्तन कर पाई है? तो ये लगातार ये बातें कही गई है। और भी कई नेताओं को देखा गया जो ये कहते हुए दिख रहा है कि सरकार आखिर क्या परिवर्तन करेगी, किस तरीके की उम्मीदें करेंगी। रिफॉर्म एक्सप्रेस की बातें सरकार ने कही है, लेकिन लोग कहते हैं कि किस तरीके का रिफॉर्म कर पाएगी तो देखना होगा। लेकिन ये बजट से पहले की बातें थी। अब सरकार की, अब तक सरकार के जो फैसले रहे हैं, जो बजट पेश किया गया है सरकार की तरफ से, उस पर विपक्षी नेताओं को अब तक नहीं सुना गया है। हालांकि जो भी तस्वीरें होंगी कोई स्वीकार तो नहीं करेगा कि कुछ इसमें बेहतर दिखा है। और हमने पहले ही कहा कि जमीनी स्तर पर कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं और तत्काल जो सुविधाओं के हम जिक्र कर रहे हैं वो नहीं दिखा। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष अपनी राजनीति करता हुआ जरूर दिखेगा और विपक्ष जरूर कहेगा कि ये बजट संतुष्टपूर्ण नहीं है। ये बजट ऐसी बढ़ते हुए भारत की तस्वीरों को नहीं बयां कर रहा है, ऐसे अर्थव्यवस्था को बयां नहीं कर रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें देखी जा सकती है। प्रीति जी निर्भय, आपने बिल्कुल सही कहा है। विपक्ष का अभी जो जितने भी विपक्षी नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आनी तो बाकी है, लेकिन जब हम बजट देखते हैं, जब करोड़ों लोगों की नजरें जो है इस बजट पर टिकी हुई होती है, तो बजट पेश होने के बाद लोग यही सवाल पूछते हैं कि आखिर इस बजट में हमारे लिए क्या है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, जो आम लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ भी नहीं सोचती है। तो आम लोगों के लिए इस बार इस बजट में क्या कुछ खास है? देखिए, आम लोगों के लिए बजट में, ऐसे तो हमने पहले ही कहा प्रीति, कई बार हमने इसका जिक्र किया कि आम लोगों के लिए बजट में तत्काल प्रभाव के कुछ फायदे नहीं दिख रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि तुरंत बजट में जो आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं वो छूट मिल गई हो, तो इस तरीके की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दिख रही है। सरकार ने तत्काल नौकरी की घोषणा कर दी है कि हम बड़े पैमाने पर नौकरी की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने इस तरीके से कुछ नहीं कहा है। लेकिन देखिए, अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो सरकार ने जरूर किए हैं। इसमें हमने देखिए कि कहा है कि पशुधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बातें कर रही है। देखिए, एक चीज और काफी खास रही और लोगों को तो इशारे थोड़ा सा इधर मोड़ना चाहेंगे हम। देखिए, सरकार जिस तरीके से इस बार फैसले किए उसमें आपने देखा कि हाल के दिनों में जी राम जी को लेकर के खूब प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस लगातार गांधी के नामों को खत्म करने की बातें कह रही है कि मनरेगा जो था
महात्मा गांधी के नाम से चल रहा था, उसको केंद्र सरकार ने उसका नाम परिवर्तन करके उसको जी राम जी नाम दे दिया गया। रोजगार गारंटी योजना है तो उसमें भी है, लेकिन महात्मा गांधी के नाम को हटाने के बाद जो जिक्र हुआ उस पर अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में महात्मा गांधी के नाम से 2 योजना और महात्मा गांधी टेक्सटाइल हब की बातें कर रही है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार ये कह रही है। तो अगर रोजगार को सृजन करने की सरकारें सहयोग करेंगी लोगों को, अगर आपको सब्सिडी दी जा रही है, अगर आपको एमएसएमई जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर अगर आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर के आते हैं तो उस पर सरकार सहयोग करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ के तौर पर देखा जा सकता है। अब इसमें देखिए कि अगर सरकार ने कहा है कि युवा वर्ग के लोग, और सरकार ने एक बड़ा अच्छा विकल्प दिया है कि अगर आप पढ़ाई से लेकर रोजगार और रोजगार से लेकर उद्योग तक के बातें कही है सरकार ने, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ बयां कर रही है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ेगा। अगर हम अपने उद्योग, अपने रोजगार शुरू कर पाते हैं और सरकार अगर इसमें बड़ा सहयोगात्मक भूमिका अदा करती है सब्सिडी के तौर पर, जगहों के तौर पर, और पहले ही सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो बिहार सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो राज्यों में अपने सरकारें भी काम कर रही है और केंद्र पे भी सरकारें काम कर रही हैं, तो इसका आने वाले दिनों में फायदा दिख सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखिए कई रिसर्च सेंटर की बात सरकार कह रही है। सरकार ने इस बार ये नहीं कहा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की भी बात सामने आ रही है, इसे इनकम टैक्स से छूट दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये भी एक बड़ी राहत की खबर है। देखिए बिल्कुल, इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसी खास बातें कही गई है। जैसे देखिए इस बार सरकार तो लगातार कई तस्वीरों को बढ़ाने की बात कर रही है, चाहे इनकम टैक्स की बात करें तो ये टैक्स के स्लैब के तौर पर भी इसे लेकर के देखा जा रहा है कि अगर आपके जो बजट के दौरान जो आपने कहा कि, एक बार सवाल जरा फिर से रिपीट कीजिए प्रीति जी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो होता है उसे इनकम टैक्स से छूट दिया गया है, यानी कि जितने भी लोग बीमा करते हैं तो जब वो सड़क हादसा हो जाता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम होता है, तो उसे जो है इनकम टैक्स से छूट दिया गया है। तो ये कितनी बड़ी राहत की खबर है आम लोगों के लिए या खास लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ी राहत की बात यह है कि मोटर एक्ट के तौर लगातार इस पर सरकार काम कर रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ये कह रही है। दूसरी तरफ टैक्स की अगर आपने बात कहा तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम की जो बात है उसमें सरकार राहत देगी। दूसरी तरफ ये कि देखिए बहुत ऐसे जगहों की तस्वीरें ऐसी बन जाती हैं जहां सरकार तत्काल प्रभाव से सुविधाएं नहीं देती है और उसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आती है। तो सरकार ने ये एक बड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की है, जो सीधे तौर पर आम लोगों को भी इसका फायदा दिख सकता है प्रीति। तो ये बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि ये लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने वाले एक फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है प्रीति जी। कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो है बौद्ध सर्किट जो है वो भी बनाए जाएंगे और ये 5 राज्यों की बात हम आपको बता रहे हैं। इस बजट में कहा गया है कि 5 राज्यों में बनाए जाएंगे। इसे लेकर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनमें भी खुशी की लहर है। कई चीजें जो है इस बजट में देखी जा रही है। हालांकि सरकार ने कहा है, निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा ये जो बजट है वो युवा शक्ति से प्रेरित है और जाहिर सी बात है कि जब हम इस बजट को देख रहे हैं तो चाहे रोजगार हो या फिर छात्रों के लिए शिक्षा हो, वो सभी चीजों को सस्ता किया गया है, रोजगार की बातें भी की गई है। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि हमारा फोकस जो है वो गरीब लोगों पर है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ खास तो देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने मिशन पूर्वोदय का जिक्र किया है कि मिशन पूर्वोदय के तहत पूर्वी राज्यों को विकास किया जाएगा, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। हमने कहा कि देश के 20 ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिसको बढ़ावा देने की बात करें और उसी में जो आपने बुद्ध सर्किट की बात की है कि सरकार ने कहा है कि बुद्ध सर्किट को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए हर स्तर पर सरकार ने अपने स्तर से लोगों को इस बजट के तौर पर जोड़ने की कोशिश की है। रोजगार सृजन, युवाओं को लेकर के आप लगातार ये कह रहे हैं कि युवाओं को बढ़ाने की आगे बात कह रही है। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया गया है और इसके तहत जो सरकार ने कहा है कि हम युवाओं को कैसे आगे बढ़ाने की बात करें। कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप देखेंगे, जैसे बायोफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल हब बनाने की बात की गई है, कंटेनर निर्माण की बात की गई है और जल मार्ग को मजबूत करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन जो होगा वो दिखेगा। और अगर इसके अलावा आप देखेंगे तो युवाओं को आगे बढ़ाने, खेल को आगे बढ़ाने के लिए
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर चार चीजों पर जो सरकार ने अपने काम कहा है, इसमें पर्यटन हो गया, किसान हो गया, रोजगार हो गया, अगर इन 3 चीजों को सशक्त कर दिया जाए प्रीति, तो ये जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भारत की एक नई रूपरेखा होगी। और केंद्र सरकार ने खुद कहा कि बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बल्कि एक बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व की नजर भारत पर है और भारत तेजी से बढ़ता हुआ एक अर्थव्यवस्था वाला सेक्टर बनता जाए, देश बनता जा रहा है। और ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत मजबूत हो जाता है तो इसका बड़ा परिणाम जो होगा वो सिर्फ देश को नहीं बल्कि आम लोगों को नहीं, माफ कीजिए, आम लोगों को नहीं लेकिन देश को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा और इसका परिणाम बेहतर होगा। ग्रामीण क्षेत्र की बात हम कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की सरकार ने कही है कि हम शुरुआत करेंगे। इसके अलावा गांधी का जब हमने जिक्र किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की शुरुआत की जाएगी। तो सरकार जो है वो रोजगार को और सशक्त करने के लिए नौकरी, बार बार मैं कह रहा हूं कि नौकरी का जिक्र सरकार ने नहीं किया है, लेकिन रोजगार उद्योग सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ वो भारत को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। भारत के स्पोर्ट्स गुड उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, बायोफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके अलावा टेक्सटाइल हब को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण सेक्टर में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप बात करेंगे तो किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार बातें, कई हमने पहले भी जिक्र किया है कि कई ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार ने कहा है किसानों की आय को कैसे दोगुनी की जाए, तो पशुधन को बढ़ावा दिया जाएगा। कई उत्पादों पर सरकार ने किया है कि उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे अखरोट, बादाम, नारियल, काजू, कोको जैसे कई ऐसे उत्पाद हैं जो किसान अगर उत्पन्न करते हैं और फिर उनका बाजार, एक बेहतर बाजार मिलता है, उसको एक बेहतर आय का स्रोत होगा उनके लिए और किसानों की आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि देश मजबूत स्थिति में जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो सरकार ये दावा कर रही है कि इस बजट में ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था है और युवाओं पर, लोगों पर विशेष जोर दिया गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेल की व्यवस्था की जाएगी। सरकार खनिज कॉरिडोर की बात कह रही है जिसके लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु को चुना गया है। शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उभरते सेक्टर को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। एआई सेक्टर का खूब जिक्र किया है। प्रीति आपको एक बार बताएंगे कि एआई सेक्टर पर सरकार विशेष काम करने की तैयारी कर रही है। सरकार का यह मानना है कि आने वाले दिनों में एआई एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देश में ला सकता है और ऐसे में एआई सेक्टर पे काम करने के लिए सरकार खूब कोशिश करेगी आगे। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो कई ऐसे बड़े, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर जिले में जो गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। इसके अलावा कई रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। जो आप दिव्यांग को देख रहे हैं, दिव्यांगों को भी कहीं ना कहीं सरकार ट्रेनिंग, तो हर स्तर पर सरकार ने इस बार, और जो इसका नाम दिया गया है बखूबी, अभी तो देखिए कि रिफॉर्म एक्सप्रेस के तौर पर अब ये रिफॉर्म एक्सप्रेस कितना आगे काम कर पाती है ये देखना होगा। लेकिन अगर एक बार आपको जल्दी में उन कुछ ऐसी बातें जो बड़ी बातें रही हैं इस बजट में, उसमें सबसे पहले सरकार ने ये कहा है कि देश में 3 और नया एम्स खोला जाएगा। 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब खोले जाएंगे। ये बड़ी बातें हैं। देखिए जिस तरीके से देश में सोशल मीडिया का दौर बढ़ता जा रहा है, कंटेंट क्रिएटर जो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरीके से सरकार का कहना है कि कंटेंट क्रिएटर लैब खोले जाएंगे। और टैक्स में बात की गई है, टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने यह कहा है कि अगर आपके विदेशों में पैसे हैं और अब तक सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है तो 1 करोड़ तक के पैसे पर आप 30% तक का ब्याज देकर के उसे आप वैध बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जानकारी नहीं होती, लेकिन बाद में पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है, जिसके लिए अब नया कानून आएगा। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन दी गई है। 31 मार्च तक कम फीस के साथ लोग आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। भारत के स्पोर्ट्स गुड उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च भी सरकार पहल करेगी। 1 दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आए हैं, ये सरकार का दावा है। इसके अलावा 5 साल में हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि करोड़ों लोगों की जो नजर थी आज केंद्रीय बजट पर, उसका इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। बजट में कई अहम बातें जो है वो निकल करके सामने आई है। कई अहम बातों को हमने भी आपको बताया है, लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट पेश करने के दौरान क्या कुछ कहा है और इस बजट में आपके लिए क्या कुछ खास है। And critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat
balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। 9वीं बार उन्होंने बजट पेश किया। इस बजट में चाहे वो छात्र हो, रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, युवाओं की बात हो, इन सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ निर्मला सीतारमण ने जरूर दिया है। हमने आपको वो पूरा भाषण भी सुनवाया है कि निर्मला सीतारमण ने चाहे रोजगार हो या फिर दवाइयों को लेकर भी क्या कुछ कहा है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें नेशन न्यूज। नमस्कार।